Hello everyone. Let me know if you guys can see my screen. Is it visible? Yes, sir. Good. Let's begin. Till last time, what all we had covered was queries, SQLs, right? What are the types of SQL? How we'll combine some SQLs, some simple one, complex one, all those we had covered. Before I begin today, anyone has any questions, any queries, any doubts regarding SQL? Anyone? No queries, no questions, no doubt. If you don't have doubts, you have to say that no, we don't have doubts. Else I'll assume you have doubts or are hesitating to ask. Is it clear with everyone? Yes, sir. Wasim, Jyoti, Shubham, Mukta. Sir, actually, No doubt. queries, Yes, sir. मैंने प्रैक्टिस नहीं की सर डेवलपर कंसोल में. It's little bit आप थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं सर. I mean, I'm not able to catch that pace of yours. थोड़ा दिक्कत हो रही है. So I just wanted to keep that in the meeting. थोड़ा सा ग्रास्प करने के लिए अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे. एंड डेवलपर कंसोल में कौन मैंने सा part प्रैक्टिस. है? Which part you are struggling? No, we haven't started developer practice only, sir. So that is the main thing, I think. See, the thing is, what will happen, I'll tell you. Abhi ye, suppose as of now, you have not practiced SQL then, right? Right, and you have also not practiced collections as of now. Collections, List, set, maps, map, list, these set, things, map. right? Yes, Then correct. the thing is, today we are planning to study DMLs. Now what happens is, ये सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसका एंड कॉज क्या होता है? अभी जब सपोज द फर्स्ट स्टेप वाज कलेक्शंस जो मैंने पढ़ा है, बिकॉज यू डिडंट प्रैक्टिस दैट, so based on that you have like maybe a 70% recollection जो पढ़ाया गया था उसका में भी 70% आपको रिकलेक्शन होगा. Now because this queries and all this from based on the list and map and everything, this was dependent on that. तो ये अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो दैट मीन्स इसका आपको 70% रिकलेक्ट नहीं रहेगा. टुडे इफ आई आस्क यू अबाउट SQL, you'll probably just recall 50%. Now based on that, if today I do the DML and the DML operations में आप करता हो, so then you will only catch only 20%. So I'll go with the same speed for 3 topics, but because they are independent, so progressively आपका हर नए टॉपिक में आप कम ग्रास्प करोगे. Right? So that is the task that you have to take care of. That part is something I have no hand on. Because it's not like you can skip a topic and you can come back to it later. If you are skipping a topic one day, that means you are also compromising the topic of next day. Okay. Jyoti, you were asking something? Everything clear about SQL? Jyoti, Shubham, Avishkar, Riduja, Salman. Hello. Yes, Actually, no doubt, sir. Everything is clear. good to hear. Others?
Some of you guys No are doubt, sir. always on mute. I'm not sure if you're listening, if you're not listening. बैकग्राउंड में मूवी चल रहा है, आप सुन नहीं रहे हो, या आपका ऑडियो नहीं चल रहा. I can't differentiate. If you guys don't have a doubt, you have to say that we don't have a doubt or we do have a doubt. At least I will know that, okay, you are getting what I'm teaching. Right? Fine. Now, ये तो चलो हमने अब तक ये सब जो हमने किए. रिकॉर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कैसे लाना है, कैसे दिखाना है, राइट? क्वेरी करेंगे, रिलेटेड भी क्वेरी कर लेंगे. ऑल दैट वी कैन डू. बट all of this is of no use until you can say, let's say, do something like this, which is contact record dot the person is equals to test. Very simple thing. कि मैं डेटा लाया, बट जब तक मैं डेटा को मैं कोड में डेटा लाऊंगा क्यों? Why am I fetching data? Because I have to do something with it, right? Either I'll use it in a condition, either I will check it, or in most cases I will modify it. डाटा हम मॉडिफाई करने के लिए ही ला रहे हैं. सो अब ये तो कोड में मैंने कर दिया, बट देन आई क्लोज इट. विल दिस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड गेट अपडेटेड इन द डेटाबेस? क्या ये डेटाबेस में चला जाएगा अगर मैंने खाली एक लाइन लिख दिया तो? No. नो, एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज दिस इज जस्ट, एज वी हैव सेड, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन की है. देयर नीड्स टू बी सम लॉजिक, सम कोड, जिसके बेसिस पे एपेक्स को पता चले कि अच्छा ये अब हमको डेटाबेस में कमिट करना है. सो फॉर दैट वी हैव DML स्टेटमेंट्स. ओके. ये लास्ट टाइम मैंने ये वाला क्लास का कोड पूरा शेयर किया था, राइट, आप लोगों को? राइट. DML स्टेटमेंट, right? So anyone knows what does DML stand for? Data manipulation language. Sorry? Data manipulation language. Exactly. जैसे हमारा SQL stand for Structured Object Query Language. DML stands for Data Manipulation Language. As the name suggests, a language which lets you manipulate data. Now, what are the types of manipulation that we have with data? Think of it like this. Right. First is we have to create something new. Completely new हमको data बनाना है. Right, similar to what we did from the UI. जैसे नया account बनाया था, employee बनाया था, right? We have to create something new. That is one use case. Then we have to modify something. Right? Existing. Something which is existing. This is something. And what is the third use case? बनाना है, मॉडिफाई करना है, और क्या केस है हमारे पास? Delete. Delete. Delete something existing. ये हो गए हमारे बेसिक केसेस. Okay. Other than that, there are two specific cases which are applicable in Salesforce. We have to recover something which we deleted. कभी कभार लैपटॉप में रिसाइकल बिन से आप रिस्टोर करते हो कि नहीं फाइल? राइट. So we have to recover something which is deleted. That is one use case. And there is one other use case
which is rarely used because it can lead to multiple errors, which is why we don't recommend actually using it, which is to we have to merge two existing things. Okay, ये है हमारे पास 5 use cases. Now, out of these 5 use cases, 1, 2, and 3 are the ones which will be most commonly used. This recover something which is deleted, we don't normally use because in a lot of things, क्या होता है? There are two basic cases. In industry, in projects, data is very important, which means ideally we should not be deleting anything. First, ideally we should not be deleting anything. Second step is even after all the checks and balances, if we are actually deleting something that is meant to be deleted, there should be no way to recover it. ये होता है actual project का use case. Like I'll give you an example. Suppose loan application. Okay, ये जो बैंक में लोन एप्लीकेशन लोग सबमिट करते हैं, अब जिसने अप्लाई किया लोन अप्रूव हो गया, ठीक है, सब हो गया, डन, फाइन, गुड. लेकिन suppose not loan application, rather a better example would be, let's say, card application. ये आप सबको आए हो दिन में 5-6 ऐसे जैसे बैंक कॉल तो आते ही रहते, राइट, स्पैम कॉल आते ही रहते, ये कार्ड ले लीजिए, ये ऑफर ले लीजिए, ये सब हो जाएगा, राइट. नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, जब आपने एक्सेप्ट किया, आपका एक कार्ड आ गया, आप वो कार्ड डेली यूज कर रहे हैं, देन यू आर अ बैंक्स कस्टमर. तो आपका हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डेटा द बैंक नीड्स टू सेव और नॉट. Yes or no? Yes, correct. Yes. In that case, that is data which is too important to be deleted. तो वो डिलीट होगा नहीं, तो इसलिए उसको हमको रिकवर करने का सिनेरियो वहां पे नहीं आएगा. नाउ द अदर केस इज, अब जो लोग को सपोज कार्ड का एप्लीकेशन बनाते हैं वो लोग कॉल करते हैं, लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं चाहिए मेरे को. सो दैट एप्लीकेशन डिड नॉट गेट प्रोसीडेड, कोई कार्ड इशू नहीं हुआ, कोई अकाउंट नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ. वो डेटा क्या 10 साल रखने का कुछ यूज है? Is there any bit benefit to keeping that data? No. No. तो फिर will there be a scenario कि उसको डिलीट करके हम वापस लेंगे? जो डेटा वापस लाने लायक सिचुएशन में होगा वो कभी हम डिलीट ही नहीं करेंगे आइडियली, right, unless there is some big mistake that happens or something. So that is why this fourth scenario is not very rarely, is very rarely used. I'll still tell you when it comes into picture, and same with this one. Okay, करा जा सकता है, एक टाइम पे करते भी थे, एक टाइम पे दिस वाज अ कॉमन ऑपरेशन, बट देन even Salesforce admin, नहीं, this can lead to issues. Okay, so there are a lot of scenarios this can lead to issues, which is why fourth and fifth are something not used frequently. You just need to know, but you should remember all 5 at all times कि 5 है. यूज भले 3 होते हैं ज्यादातर, लेकिन 5 है आपको ऑलवेज याद होना चाहिए. शुड नेवर फॉरगेट कि 5 है. नाउ these 3 are the ones which we'll be focusing on, and there is one bonus. Okay, one bonus we'll have to remember. वो भी एक है, वो हम इसके साथ. Is this clear till now? What all I have explained कि what are the operations in DML? क्या क्या डेटा के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं? Yes, sir. Great. Now, very simple. I'll write down. Insert, update. The bonus one is upsert. Then we have delete, undelete, and merge. That is all. ये 6 वर्ड है आपका DML. Now, how does this work? Let's create a
contact record equals to new contact record dot account ID is equals to कॉन्ट्रैक्ट पे कौन कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, अकाउंट आईडी है एंड लास्ट नेम. आई थिंक ईमेल आईडी भी है इस एनवायरनमेंट में. हमने आई थिंक ईमेल आईडी भी मैंडेटरी किया था. लेट्स जस्ट चेक. इस पे 3 कॉन्टैक्ट है. पोर्ट okay. Contact 1. Okay, pretty simple. Insert record. ये मेरे पास है 4 लाइन. I'll just go open execute, paste these 4 lines. Success. Code contact one got created. Right? So जो फील्ड मैंने सेट की वैसे पॉपुलेट हो गई. अकाउंट नेम पॉपुलेट हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पॉपुलेट हो गया, एंड इट गॉट सेव. All I did was just use one word, which is insert. Now, if let's go here, and what I'll do is, let me create a list of content. I'll make it record 1. And तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 वेरिएबल मैंने भी बनाए. And instead of one insert, what I'll do is every one of this I'll add in that list. Okay. Contact list dot add record 1, record 2, and record 3. And this time what I'll do is instead of one record, I'll insert the whole list. Okay, पहली बार मैंने insert के बाद एक record दिया था, which was contact record. This time I have put a whole list. उस list के अंदर मैंने 3 contacts add कर दिए. Let's run this class and see what happens. Instance dot test demo. Right? As of now, how many contacts I have on the account?
4. Let's execute. क्रिएट हो गए 2 3 4. तो इंसर्ट कीवर्ड आप जब भी यूज करते हो वो क्या करेगा, आपका डेटाबेस में नया records क्रिएट कर देगा. Now insert you can use with a single record or you can also use with a list of records. Is this clear? यस सर. सर एक बार फ्लो फिर से बता दोगे कोड का पूरा फ्लो. Right. So when I create a record, insert कीवर्ड के बाद आप अगर कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी डालें तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा, लिस्ट डालें तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा, नया पूरा वो क्रिएट हो जाएगा. एक लिस्ट में अगर आपने 10 रिकॉर्ड डाल के वो किए तो इंसर्ट उस लिस्ट में से 10 के 10 रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा. राइट. So insert keyword is used for our first scenario, which is when we have to create something in data. Okay. So that is what is the purpose of. पहले ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है फिर वो लिस्ट में ऐड हो रहा है क्या? Sorry. पहले ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है फिर ये सब ऐसा ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऐड हो रहे हैं क्या? हाँ, तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो दिखाया. राइट. पहले डायरेक्ट रिकॉर्ड ऐड करके भी देखा, इंसर्ट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड किया ना हमने, वो भी चला. फिर लिस्ट से किया, लिस्ट से भी चला. So insert can be used to create one record or a list of record. In both cases, the command will work. कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट ऐड ए मेथड है क्या? कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट एड लिस्ट के मेथड्स मैंने आपको बताए थे. राइट. लिस्ट में हम कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं? मैथ में हम कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं? Put. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हमने लिस्ट में तीनों एलिमेंट एक एक करके ऐड किए, फिर पूरा लिस्ट ही इंसर्ट कर दिया. नाउ द क्वेश्चन कम्स, which way to do? Right. Again, we are back to that same question. What is the best way? Salesforce में किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? ऑलवेज बेस्ड ऑन कोड में हम बेस्ट वे कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्वेरी हम कैसे डिटरमाइन कर रहे थे? अप्रोच कैसे डिटरमाइन कर रहे थे? लूप देना है, क्वेरी ज्यादा लिखना है, बेस्ड ऑन व्हाट वी वर डिसाइडिंग दैट. जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो उसको. And yeah, so best practice are made for what? For the limits, right? Yes, limit. So the same thing is applicable here also. SOQL का लिमिट था, DML का भी लिमिट है. SOQL का लिमिट कितना था? 50,000. नहीं, वो तो एक SOQL कितना रिकॉर्ड रिटर्न करेगा. SOQL आप कितनी बार 100. चला सकते हो? 100. सिमिलरली DML का भी रेस्ट्रिक्शन है 150. अब अगर DML का रेस्ट्रिक्शन 150 है, does it make sense to write 3 times insert for each record separately? Not required. Exactly. That is why I told you, right? Collections are very important. This thing has a specific name which is called bulkification of code.
That means आपका code can always run for bulk records, collection of records, not for single records, right? So for DML operations, it is always better to use the list instead of single records. Why? Because we have to keep the count of insert less. अगर मैं 150 बार अभी कुछ इंसर्ट करूं तो वो एक्सेप्शन दे देगा. जैसे लूप में क्वेरी लिखने पे एक्सेप्शन आ रहा था, लूप में आपने इंसर्ट लिख दिया गलती से, तो 150 टच होते ही एक्सेप्शन आ जाएगा. नहीं, नाउ इंसर्ट तो चलो हमारा हो गया. व्हाट इफ आई वांट टू मॉडिफाई समथिंग? उसके लिए हमारे पास एक है अपडेट. द नेक्स्ट कीवर्ड इज, फर्स्ट इज अपडेट. नाउ अपडेट का पर्पस क्या है? लेट मी कमेंट दिस पार्ट. सर सर कुछ भी करने से पहले थोड़ा कोड शेयर कर सकते हैं सर आप चैट में, यू डोंट माइंड? Yeah, I'll do one thing. I'll not delete any code. I'll comment the code and I'll share the whole file at the end. Okay? Thanks. Right. Fine. So let me comment this part now. And let's go back to single record. हम वापस single record पे आ चुके हैं, which is contact record 1 is equals to new contact, and this time we have named it number as 5. Now I'll insert this record 1. तो मेरा ये contact 5 ideally insert हो जाना चाहिए, which is code contact 5. What I'll do now is I'll write record 1 dot first name. I'll change it to code 5. Just I'll add something random. Code 5, I'll do it. And this time I'll write update record 1. Now, if you follow logically क्या होगा? यहाँ पे contact record 1 का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें नया contact record आएगा, account ID सेट हुआ, first name सेट हुआ, last name सेट हुआ, and now we have done an insert. तो डेटाबेस में जाके मेरा आइडियली कोड contact 5 नाम का एक contact record क्रिएट होगा. Then I am setting again the first name to, instead of code, to code 5. And this time I am doing an update. तो अपडेट क्या करेगा? वो डेटाबेस में जाके फिर से इसको मॉडिफाई कर देगा. And ultimately we should be ending up with a contact whose name is what? Ultimately कौन सा नाम का contact होगा? Code 5 first name. Code 5 contact 5. First name plus last name, right? Let's check. Code 5 contact 5. So it got created and got updated. So update operation just does that, nothing else. Existing record है, update कर देगा. Now you have to remember one thing. ये जब मैंने यहाँ पे लिखा update record 1, right? तो because this record was inserted here only. Okay, let me do another example. Let me write here, say contact record 2 is equals to new contact. I'll create another variable, and this time I'll do is I'll immediately write record 2 dot first name is modified and update record. So ideally देखो ये दोनों लाइन जो है, this is also the same line, and I've created a contact record here. So
If I run this code, what should happen now? अभी क्या होगा? First name should be modified and Okay. it's Last name will remain contact phase. yeah. Okay. Let's run this. Okay, let's make it 6. 5 already created. Right? Create 6. And execute. See. System DML exception update failed. First exception on row 0. Missing argument. ID not specified in an update call. So what happened here is Salesforce को कैसे पता चलता है कि कौन सा रिकॉर्ड डेटाबेस में जाके अपडेट करना है? उसको पता चलता है बेस्ड ऑन द आईडी. नाउ इन द अबव केस, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड बनाया था, राइट? तो जैसे ही मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इस रिकॉर्ड वन वेरिएबल में ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड आईडी आ गया कि ये तो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, तो आईडी है. इसीलिए उसके बाद जब मैंने अपडेट किया, वो अपडेट हो गया क्योंकि आईडी का वैल्यू उसको मिल गया. So when you already have, you're sure that your record has an ID, you can directly do an update. This comes back to that reason जो मैंने आपको बोला था, कभी भी आप SOQL से record query कर रहे हो, make an habit of always adding ID in the query, ताकि उस record को कहीं बाद में जाके अगर 50, 60, 100 लाइन बाद आप update करो due to some reason, वो update fail ना हो. अपडेट चलने के लिए यू ऑलवेज नीड द आईडी फील्ड. अब जहां पे खुद ही इंसर्ट किया है तो आईडी तो यहीं पे जनरेट हो गया, लेकिन अगर आप क्वेरी से लेके आए हो तो आपने अगर क्वेरी में आईडी नहीं लिखा, then it will fail and you will get this exact same exception. You tried to update without an ID. So Salesforce doesn't know which record to actually update. Now how to solve that? There is a way to solve that. Suppose ये मेरा वेरिएबल है, ब्लैंक वेरिएबल है, इसमें खाली फर्स्ट नेम है, इसमें कुछ आईडी नहीं है. What if I just write here record2 dot id is equals to, ये record 1 का कुछ तो id जनरेट हुआ होगा, राइट? ना डाल देता हूं. either I can write like this, या फिर मैं पुराने किसी कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट आईडी यहाँ पे पेस्ट करता हूं. that also I can do. That means either your updated record should already have an id present in one way or the other. या तो आपने इंसर्ट किया है या आप SOQL से आईडी लेके आए. नहीं है तो आपको एक्सप्लिसिटली आईडी का वैल्यू देना पड़ेगा, तो ही अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट नहीं होगा. बिकॉज सेल्सफोर्स जब अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, इट नोज ओके रिकॉर्ड टू कॉन्टैक्ट टाइप का एक रिकॉर्ड मेरे को अपडेट करना है. इट गोज टू द कोड डेटाबेस एंड इट सीज, अरे यहाँ पे तो 8 कॉन्टैक्ट है, कौन सा अपडेट करना था, आईडी ही नहीं थी. सो इट थ्रोज अ एक्सेप्शन. बट एज सून एज यू असाइन एन आईडी टू दिस, now we will end up with your modified contact 6. आईडी उसको मिला तो वो अपडेट कर देगा, आईडी नहीं मिला तो वो कैसे अपडेट करेगा, राइट? इज द अपडेट क्लियर? Yes, sir. Okay. Everyone else? Yes, sir. Okay, great. Now अब इस केस में हम क्या करेंगे, वापस इंसर्ट के लिए हमने लिस्ट यूज किया था, अपडेट के लिए भी हम लिस्ट यूज कर सकते हैं. इट्स एप्लीकेबल. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस, इफ आई हैड एडेड अ लिस्ट हियर, तो वो भी हो जाता, नॉट एन इशू. नाउ देयर इज अ बोनस. ओके, व्हाट इज दैट बोनस?
Upset. Let me share Upsort. this code to you. Upsort. Share this code in the chat first. मेरे को ही लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इतना सा कमेंट्स के बीच में जावा कहाँ गया? Right, I've shared the code in the chat. Now, the bonus is upsert, which works in a very unique way. How? अभी हमारे पास क्या होता कि हमने इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया, राइट? अपडेट किया तो अपडेट भी हो गया, बिना आईडी के अपडेट करने की कोशिश की तो फेल हो गया. देयर इज ऑल्सो द अदर थिंग कि अगर आप आईडी वाले वेरिएबल को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा, बोलेगा कैसे पहले से आईडी है, इसमें तो पहले से आईडी है, फिर से कैसे इंसर्ट करूं? सो दैट इज ऑल्सो फेलिंग. सो इन दैट केस व्हाट सेल्सफोर्स डिड वाज उसने बनाया है अपसर्ट. अपसर्ट का पर्पस इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपडेट एंड insert. Actually means update or insert actually. जो functionality wise if you think of it, right? It means update or insert. How it works? I'll give you a very good example. दो हमारे पास contact लेते हैं. Let's say contact record 1 is equals to new contact, and I'll make this as record 1 dot id is equals to कोई भी एक अकाउंट का कॉन्टैक्ट का हम आईडी ले लेते हैं. ये मॉडिफाइड कॉन्टैक्ट 6 का आईडी लेते हैं, राइट? इक्वल्स टू इसका आईडी ले लिया मैंने, एंड लेट्स मेक इट्स email as modified. No, let's make it last name. Contact record 7. ये मैंने एक बनाया. Let's create a list of contact. Right, and we'll start add record 1. तो मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक मैंने रिकॉर्ड डाला जिसमें आई हैव एडेड एन आईडी एंड आई हैव आल्सो सेट अ लास्ट नेम. अब हम क्या करते हैं, एक और कॉन्टैक्ट बनाते हैं. record 2 is equal to, right, and record 2 dot last name contact record 8, and we'll start at record. Pretty simple. एक हमने लिस्ट में डाला रिकॉर्ड जिसमें आईडी है, एक हमने डाला जिसमें आईडी नहीं है. कौन सा वाला हमने डाला जिसमें आईडी है? दिस वन. एंड वन वी हैव डन व्हिच डज नॉट हैव एनी आईडी. लेट मी ऐड आल्सो, एक नाम डाल देते हैं इसका पर्सनल ताकि पहचानने में प्रॉब्लम ना हो. record dot first name is equals to upset. Now if I had written here insert clist, क्या होता? Anyone? If I had written here insert clist or update clist, क्या होता? जो आईडी का रिकॉर्ड है वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा और ये फेल हो जाएगा. नेक्स्ट. No. When I try to do, okay, so the concept here is this is like a complete transaction, which means insert जब मैं करूंगा, right, not rather a complete transaction like a
देयर इज अ स्पेसिफिक फ्लैग, उसका वैल्यू है ऑल और नन, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट थिंक ऑफ इट लाइक देयर इज नो पार्शियल। ठीक है, लिस्ट में 2 रिकॉर्ड हैं, आइदर दोनों प्रोसेस होंगे या दोनों नहीं प्रोसेस होंगे, विच मीन्स जब मैं इंसर्ट करता हूं सी लिस्ट तो पहले रिकॉर्ड में आईडी ऑलरेडी है, तो विल दैट गेट इंसर्टेड? हाँ, पहले वाला तो इंसर्ट होना चाहिए। नो, एंड एज सुन एज दैट फेल्स दैट मीन्स दूसरा रिकॉर्ड भी प्रोसेस नहीं होगा। ओके, नाउ अगर मैंने लिखा होता अपडेट सी लिस्ट, सो दैट वुड मीन पहला वाला अपडेट होगा, दूसरे वाले में आके क्या होगा, उसको आईडी नहीं मिलेगा, तो बिना आईडी के अपडेट नहीं हो सकता। सो देन अगेन इट विल थ्रो दैट एक्सेप्शन और पूरा रोल बैक हो जाएगा। तो अगेन ना इंसर्ट हो ना अपडेट हो, कुछ भी नहीं हो। एंड देयर आर स्पेसिफिक केसेस जहां पे यू मे नॉट नो रिकॉर्ड है कि नहीं है, you may need to check. So that is why what Salesforce did is it created the command of upsert. And upsert, what it does, अगर आईडी मिला तो इंसर्ट कर देगा, सॉरी अगर आईडी नहीं मिला तो इंसर्ट कर देगा, अगर आईडी मिल गया तो उसको अपडेट कर देगा। दैट इज व्हाट अपसर्ट does. That if it finds an ID it will update, else it will insert. Now if I run the specific code based on the logic I have told you, what should be happening is this record should get updated as soon as I refresh to modified contact record 7. And another contact should also have been inserted, which should be a modified contact record. Oh, I did not map the account ID. अरे account ID नहीं डाला तो वो कहीं और create हो गया. No worries, we'll find it in all contacts. Upsert contact record it create हो गया. That means upsert will either update else it will insert. That is the functionality. Is this clear? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये अपसेट यूज करने का ये है रोल बैक नहीं होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूज कर देना इन केस रोल बैक नहीं हो और हमारा प्रोग्राम फेल ना हो तो नहीं, यहाँ पे इट इज रोल बैक। ये जितने डीएमएल मैंने अभी आपको बोले हैं ये सारे हैं रोल बैक वाले, कि इधर सारे प्रोसेस होंगे नहीं तो कुछ प्रोसेस नहीं होगा, या तो सारे। थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर मैं 100 कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ और किसी एक कॉन्टैक्ट का कोई वैलिडेशन रूल फेल हो गया, तो दैट डज नॉट मीन 99 विल गेट क्रिएटेड, 0 विल बी क्रिएटेड, वो पूरा रोल बैक हो जाएगा। सो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो, वी विल एक्सप्लोर दैट। बट डीएमएल कमांड में पूरा रिटर्न होगा, पूरा रोल बैक होगा, इट डज नॉट लेट यू डू एनीथिंग। it's a one-way process, right? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो या
It seems I got disconnected for a bit. Must be some network issue. हाँ Am I सर audible? यस यस आई ऑडियो now. Yes. DMLs, direct DMLs जो हैं, these are all or none. Okay. तो या तो सारे प्रोसेस होंगे या फिर सारे हट जाएंगे। दूसरा एक है that partial if you want to do, there is a way to do that obviously, but not with these commands. Okay, not with these commands. Now ये तो चलो हमने करा, अभी तक जो हमारे पास काम नहीं किया। Now let's do one thing, the simplest thing. Select ID from contact, सारे contact आ जाएंगे यहाँ पे, and delete CDs. It's pretty simple, nothing too complex here. Just I'll go, I'll run this code. Okay, this is a reference. Fine, yeah, this is a reference thing. You have to remember how it happens. Sometimes some records are related in such a way that they are called associations, right? For few of the standard objects, they are called associations. So in this case, मैंने just ये direct जो query किया ID from contact करके, तो जितने contact है सारे आ गए, and I tried to delete all of those contacts. But कोई एक specific contact है जो because it is associated to this case वो delete नहीं हो पाया. So then the end result is कोई भी contact delete नहीं. Okay. Now if I remove this actual check to all contacts, if you see, why is it showing just my contacts? I don't know my contact. All contacts. Right. Now if you see here, all contacts are here. Right. Out of this, let's say I want to create, remove these ones. Code, जिनका first name है code. Right. Sir, sorry to interrupt you. Could you please share your screen? It's not showing. This is not visible, my screen? Visible to us. Visible, sir. Visible, right? No worries. I'll reshare. I'll reshare once more. फिर से एक बार share कर देता हूँ. Must be some issue. Right. Now, from contact, let's add from contact where first name like let's delete, successful, and if I refresh this, these all will get removed. Why? Name match हुआ, query match हुआ, record हट गया. Pretty simple. Just delete. One of the most simplest operation, but you have to take too much care whenever using it. Now, this was our delete.
right? Is it clear? Delete the code I'll share in the chat, and this also I'll share in the chat. Anyone, any doubt regarding the basic operations? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. No? Fine. I'll share you guys this link. I want you guys to study this today to get to grasp with the insert, update, upsert, and delete. Okay. And then tomorrow, what we'll be studying is, first of all, you have to make sure you understand everything about these three operations that is to be there, because you will need that understanding if you want to move to the next step, which is this one, which lets you do the partial modification without the rollback, which you were asking, Wasim, right? तो ये करने से पहले ये वाले ऑपरेशन आपके पूरे क्लियर होने चाहिए. Then only you will know the difference between this and that. When to use this, when to use that. Okay? Okay, sir. Great. Great. So then just go through this link, go through the code I shared, go through the code I did in this class and the recording, and then just practice this yourself. Contact banao, account banao, do tin banao. And then once tomorrow, by tomorrow, then we should be able to wrap up the DML also. And then we will have an assignment for Apex, which will do your help you write a method, query data, pass data, modify data, and also commit to data. Okay. So for that, we need to wrap up the DML by tomorrow. So please make sure you study all the basic operations and come prepared tomorrow. Okay. Okay, sir. Good. Thank you, everyone. That will be all for today. Have a good night.